हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ JTO LICE 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके सेक्शन 2 जो टेक्निकल पेपर स्पेशलाइजेशन है उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ये एग्ज़ाम सितंबर 2024 में हुआ था और इस एग्ज़ाम का जो पेपर है उसके अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लेवल ईजी है। ये जो क्वेश्चन है अगर आप JE आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या डिप्लोमा सैप्टेम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं और इजी लेवल के अगर आपकी ब्रांच AC IT कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा हुआ है वो है इन फेज मॉड्यूलेशन व्हाट पैरामीटर्स ऑफ द कैरियर वेव वेरीज विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फेज मॉड्यूलेशन में व्हाट पैरामीटर्स ऑफ द कैरियर वेव वेरीज। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसका वेरी होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का पैरामीटर क्या वेरी होता है ये पूछा हुआ है। तो देखिए इन द फेज मॉड्यूलेशन कैरियर वेव वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, दिस मीन्स दैट क्या होता है, देखो पूछा क्या है विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऐसा पूछा हुआ है एक्चुअली विद द आप ऐसा कह सकते हो कैरियर वेव वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऐसा भी आप कह सकते हो। लेकिन वेरी क्या होता है फेज मॉड्यूलेशन में, फेज ही वेरी होता है। हाँ, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, फेज शिफ्ट होता है और उसी की वजह से आपको जो मॉड्यूलेशन मिलता है उसे फेज मॉड्यूलेशन PM कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे दिया हुआ है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। देखिए सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन के लिए जनरली जो है हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जिसे कहते हैं TLS इसका यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब ओल्डर वर्जन ऑफ दिस प्रोटोकॉल जो था वो SSL था जिसे कहते थे सिक्योर सॉकेट लेयर। हाँ, ये ओल्डर वर्जन था इसका और इसी के तहत जो है हाँ अब जो है वो TLS जो है वो लार्जली रिप्लेस हो चुका है ड्यू टू इंक्रीज सिक्योरिटी फीचर। और इसीलिए जब आप पढ़ते हो ना HTTPS वेब एड्रेस में, ठीक है, तो वो क्या होता है HTTP ओवर TLS, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो HTTP जो है ये प्रोटोकॉल जनरली हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TLS यूज़ करते हैं इसलिए उसमें उसके बाद में जो है वो एस आगे आ गया। पूरा नाम अगर आप पढ़ोगे तो HTTP ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the reverse current that flows through a silicon junction diode when it is a reverse bias। देखिए रिवर्स बायस में होता है आपका डायोड, तो रिवर्स करंट जो फ्लो होता है उसे लीकेज करंट भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये मतलब बहुत ही इजी लेवल के आप कह सकते हो कि डिप्लोमा लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है सारे पूछे हुए हैं यहाँ पे। Which among the following component is responsible for transferring energy between the primary and secondary winding in the transformer। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर का होता है उसमें एनर्जी कौन ट्रांसफर करता है, कहाँ से ट्रांसफर होता है। तो देखिए द कंपोनेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कोर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है ये बिल्कुल ही सही आंसर है। ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या करता है, जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होता है और AC जो है उसमें फ्लो होता है तो क्या होता है, फ्लक्स जो होता है हाँ वो कट होता है और इसकी वजह से आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, और वो क्या करता है उसकी वजह से उसके बाद वो ट्रांसफर करता है एनर्जी का प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। ट्रांसफार्मर कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये भी प्रीवियस JTO LICE में पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उस पर वो वर्क करता है, उसके प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो कोर से जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ DBMS। देखिए अब DBMS बहुत डिटेल में लोग पढ़ रहे थे, तब भी मैं बोल रहा था कि DBMS में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, DBMS जो है उसका बेसिक्स ही पढ़ लिया होता आपके इस एग्जाम के लिए इनफ था।
हाँ, बहुत ही 2-3 सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे हुए हैं। मेन पर्पस क्या है डीबीएमएस का? डीबीएमएस का मेन पर्पस है टू मैनेज एंड रिट्रीव द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सफिशिएंटली एंड इजीली, यही तो है उसका पर्पस। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट? देखिए कितना पिटा हुआ क्वेश्चन है ये तो मुझे लगता है जिसका ये क्वेश्चन गलत है ना वो एग्जाम पास होने के लायक ही नहीं है, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये एग्जाम इतनी बार अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं और इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन है और पिटा हुआ क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए। नैंड एंड नॉर गेट जो यूनिवर्सल गेट है, क्यों यूनिवर्सल गेट कहते हैं? क्योंकि इसका यूज करके हम बाकी सारे गेट जो है वो बना सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर? देखिए ये एग्जाम, ये भी रिपीट्स क्वेश्चन है। देखिए ऑलमोस्ट ये 7 क्वेश्चन में 3 रिपीट्स क्वेश्चन आ गए। हाँ, कितने रिपीट्स क्वेश्चन है ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये भी स्पेशल जेटीओ एलआईसी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि बायोस का रोल क्या होता है, उसके पहले की एग्जाम में पूछा हुआ है। बायोस का रोल होता है टू परफॉर्म द स्टार्टअप प्रोसीजर। हाँ, स्टार्टअप जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हम बायोस जो है उसका यूज करते हैं, मतलब रोल जो होता है बायोस का वो वही होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीबीएमएस का अगेन द की डेट यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रो इन द टेबल। हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है? प्राइमरी की आइडेंटिफाई करता है। ये भी पिटा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये भी रिपीट्स क्वेश्चन है, इसके पहले के एग्जाम में पूछ लिया है। प्राइमरी की क्या करता है? ईच रिकॉर्ड जो होता है टेबल में वो यूनिक होता है, मीनिंग नो टू रोज कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर प्राइमरी की कॉलम। हाँ, इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज एंड इट यूज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल एंड डेटाबेस। तो वही तो होता है प्राइमरी की। डिटेल में मैंने इसके बारे में एक लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि वो डीबीएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देख लेना। एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन वहां से आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन आइडिया बिहाइंड जावास ओओपी, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी पिटा हुआ क्वेश्चन है। Main idea behind the Java's OOP concept includes these 4: abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism। बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है। polymorphism क्या करता है? polymorphism allows object of different classes to be treated as an object of an common superclass. It enables one interface to be used for general class of the action when the specific action is determined by the exact nature of the situation. So this prompts flexibility and scalability in the code, you can say. So this is the polymorphism. Which of the following is used to measure the capacitance of the capacitor? Capacitance of the capacitor measure करने के लिए we are using capacitance meter or capacitors meter applies a small AC voltage to the capacitor and measure how much charge is stored, thereby calculating its capacitance. So some digital multimeters also have this functionality to measure the capacitance, also we call as a capacitance meter. Which of the following is the least common modulation technique used in the traditional analog radio communication system? Look, now this question is very important question and many are saying that this is the wrong question. Actually, this is not wrong question. This is actually right question and answer is also right. Least common modulation technique. Okay, least common modulation technique used in traditional analog radio communication system. तो ट्रेडिशनल एनालॉग रेडियो कम्युनिकेशन में हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? देखिए क्या यूज नहीं होता या क्या सबसे कम यूज होता है, दैट इज दिस क्वेश्चन। हाँ, सो लीस्ट कॉमन मॉड्यूलेशन वी आर यूजिंग दैट इज ASK ओनली। हम आपको पता है ट्रेडिशनल एनालॉग कम्युनिकेशन में AM FM PM का तो वाइडली यूज करते हैं। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है वो पूरा AM से ही तो होता है। काफी लोग बोल रहे हैं इसका सही आंसर AM होगा। हाउ AM कैन बी द राइट आंसर? हाँ, AM तो सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम में, ब्रॉडकास्टिंग में। FM तो आपको पता ही, आप सुनते हो। हाँ, PM का भी यूज आप करते हो। तो यहाँ पे जो है ASK is not again analog communication system. ASK is a digital modulation technique. Not commonly used in the traditional analog radio communication system. So this is the correct answer. Okay, all other 3 communication system are widely used in analog radio communication system. So ASK is the least modulation technique that we are using in the analog radio communication system. Option A is the correct answer here. यहाँ पे कोई grievance raise करने की जरूरत नहीं है। What kind of network does Bluetooth represent? देखिए this is the very simple question. हाँ, just one twist is there and the given answer by candidate is wrong. देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, अगर आप मैंने मेरे आपके पुराने मतलब पेपर सॉल्यूशंस देखे हुए हैं तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया भी है कि देखिए 3 ही टेक्निक होती है।
हाँ, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। हाँ, ये एन कर देते हैं, काफी लोग बोलेंगे यहाँ सर ने एम कर दिया। देखिए ये लैन, वैन एंड मैन, ये तीन ही टेक्निक है, बाकी सब तो फालतू के नाम है। हाँ, एक्चुअली में तीन ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। उसमें भी देखो तो एक्चुअली ये दो ही है, लैन एंड वैन। हाँ, बाकी मैन, सैन, आप जितना भी बोलना चाहो, आप फिर जो भी एरिया डिफाइन कर दो उसका एक नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो और उसके बोल सकते हो कि ये एक नेटवर्क हो गया। ऐसा नहीं होता। हाँ, एक्चुअली में तो लो ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क, अगर फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्टेड है और अगर वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हो जो फिजिकल वायर के थ्रू नहीं है, वायरलेस है, तो वैन होता है। बाकी एरिया और वो सब एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी है, बाकी दो क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं। और उसमें देखिए जनरली आपका ब्लूटूथ जो है वो, ब्लूटूथ में आप क्या कहते हो, हमारा ब्लूटूथ जो है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ, क्योंकि छोटे से रूम में आप बैठ के मतलब कर सकते हो, तो ब्लूटूथ जो है वो आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लेकिन कैसा है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? हाँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज द आंसर, very simple question, a very basic question from DBMS. Next question, which instrument is used to measure the power factor of an electrical circuit? To measure the power factor of an electrical circuit, we are using the wattmeter. Wattmeter we are using for measuring the power and also a power factor. So option A is the right answer. Very simple question again. Which among the following was not an open OS? What is not open OS? Okay. सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो विच आर द ओपन ओएस, यू नो, हाँ, Ubuntu, you know, very widely you are using open OS. First of all, what is open OS? So we can say the operating system that is open source, we can say that is a open OS. We can say that like Linux, also FreeBSD, Open Solaris is also open OS. Then Mac OS is a proper IT operating system developed by Apple, and source code is not open to the public. So this is not open OS. Mac OS is not open OS. Even Microsoft Windows you are using, this is also proper IT operating system with the source code that is not publicly available. So these are not open OS. Linux आप घर पे CD मंगवा के भी चला सकते हो। हाँ, यू कैन गूगल में सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यू कैन गेट दिस OS इन फ्री में मिल जाएगा आपको, यूबंटू वगैरह। ठीक है, लिनक्स यूबंटू का मतलब यूबंटू जो है वो उसका एक पार्ट है, यू कैन से। ओपन सोलारिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, दैट वाज ऑन बेस ऑफ सोलारिस ओएस डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम। हाँ, ये भी एक ओपन ओएस सिस्टम ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, आपको पता है लीनियर कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका स्टैक हो गया, क्यू जो है आपका, हाँ, जो जनरली अलग अलग कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। स्टैक जो है आपका लीफो पे वर्क करता है, क्यू जो है वो फीफो पे वर्क करता है, मतलब फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक जो है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। तो ये सारे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एरे, एरे इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन इन द रेडियो कम्युनिकेशन? देखिए ये भी रिपीट्स क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने आपको करवाया हुआ है, एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट में भी पूछा था इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि आप जब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन का? बेटर नॉइस रेजिस्टेंस, हाँ, और इंटरफियरेंस भी कम होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? देखिए इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जो है आपको पता है, इन्वर्टर जो है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इन्वर्टर इन द इलेक्ट्रिक सिस्टम इज टू कन्वर्ट द डीसी टू AC, direct current to alternating current, or we can say invertly. Generally, inverter are used in many various applications, including you can say renewable energy systems, then uninterrupted power supply, then power electronics where we are operating AC power device from DC source. Then all these are applications of this inverters. This is very simple question again. What is the primary purpose of demodulation in communication system?
primary purpose of demodulation in the communication system is to recover the original information, or you can say recover the signal from the modulated carrier wave. So to recover the original information signal from the modulated carrier wave, option A is bilkul correct answer. You can say next question, what is the resolution of ADC 0808? यहाँ पे आपको दे ही दिया है 808 8 बिट का ही होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज MIM स्टैंड्स फॉर। अब देखिए आप 5G के ज़माने में हो तो आपको पता है आपका यहाँ पे दिमाग में आएगा कि सर 5G में हम मीमो यूज़ करते हैं, मल्टी इन मल्टी आउट, ये उसकी बात नहीं है। हाँ, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द IT। तो यहाँ पे वो 5G वाला मीमो नहीं है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट वाला। यहाँ पे MIME पूछा हुआ है, दैट इज फ्रॉम IT एंड दैट MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। MIME क्या है? MIME इज द स्टैंडर्ड दैट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेज टू सपोर्ट टेक्स्ट इन कैरेक्टर सेट्स अदर देन ASCII as well as attachment of audio, video, images and application program. MIME allows email systems to handle multimedia content and complex message format. In context of file type extension, MIME types or media types help identity the type of the content in the file. You can say guiding application on how to handle it. For example, MIME type file be text plain or plain text file, or you can say image JPG or JP image file. And there is multi-purpose internet mail extension you can say. Okay, next question is the Western bridge is primary use for the measurement of Western bridge. आपको पता है resistance measurements के लिए use होता है, so option C is the right answer. हाँ, Western bridge primary use for the measurement of the resistance. It is the circuit that measures the unknown electrical resistance by balancing two legs of the bridge circuit, and the basic principle involves adjusting the known resistance in the bridge until the voltage between the two midpoint is 0, at which the point the unknown resistance can be calculated based on the known resistance and the bridge configuration. This method provides the precise measurement of the resistance. Next question is, what is the function of router in the network? The function of router in the network is to connect the different network and forward data packets. So option B is the right answer. Forward data packets between the different network is the primary function of the router. You know, router operates at the layer 3, or you can say the OSI model में network layer जो होता है वहाँ पे router जो है that works. This question is also repeatedly asked in the exam. So this is the function of a router. You can say different functions router can provide that are network address translation, that is NAT, firewall protection, dynamic routing. All these can be provided by router. Next question is, what is the term used to describe the software that manages and maintains the infrastructure of a computer system? Infrastructure of the computer system managed by system software. So option B is the right answer. System software include, you can say, OS, operating system, and utility program that manage the hardware resources and provide the essential service for its application software. It ensures the smooth functioning of the computer hardware and facilitate the execution of the other software application. You can say example of the system software includes the operating system, or such as operating system such as we have seen recently that Windows, Mac OS, Linux, Unix, these are the operating system. Utility programs such as, you can say, management tools, antivirus softwares, disk management tools, and system optimization tools. These are the utility programs. So system software act as an intermediate between the hardware and user application, managing the system resources and providing the platform for application software to run. Next question is, which of the following frequency band is typically used for uplink communication from ground station to satellite? Now this is very interesting question. Generally we are using KU band for the uplink communication in the satellite communication system. In satellite communication, different frequency band are used for the uplink, and in general we are using this 12 to 18 gigahertz KU band for uplink communication, but KU band is not there in the option. So we can say other band than KU band we are using, that KA band and C band also oftenly used. So here C band will be the correct answer. If it is given KA band, then KA band also is the correct answer. Next question, in JFET, what happens to the drain current ID when the gate to source voltage is increased beyond the pinch of voltage?
Now what will happen if VGS, that is gate to source voltage, increase beyond the pinch of voltage? So in the JFET, that is junction feed effect transistor, when VGS is increased beyond the pinch of voltage, drain current becomes the constant and does not increase significantly with further increase the VGS. What happens in the pinch off condition? In pinch off voltage is the gate to source voltage at which the channel is fully depleted, you can say, or charge carrier, effectively creating a pinch off point in JFET. Beyond this voltage, the channel narrows significantly. In saturation region, when VGS exceeds VP, the JFET enters into saturation region, we can say. So in this region, the drain current becomes relatively constant. This is the graph. You have seen that this is the after pinch off, the saturation is that this is the linear region. So current became constant. This is very simple question. Okay, so constant current we are getting. Next question: which type of device is ADC0808? Again, the second question of ADC808, there is nothing but analog to digital converter. Very simple question. Next question: in three-phase star delta connection, if the line voltage is 415 volt, what will be the phase voltage? This is also a question of discussion. Many are saying my 415 volt is the right answer. Many are saying the different, that is 240 volt given here, is the correct answer. But actually both of these are correct, I can say. Then actually this question should be the open question. Three-phase star connection should be there or three-phase delta connection should be there. It's not like three-phase star delta connection is there. Look, if it is given like three-phase star connection, that we also saying a Y connection or star connection, then your V phase will be 240 volt, because V phase equal to VL by root 3 for star connection. So it will be 240 volt. Okay, if it is delta connection given, then for delta connection V phase equal to V line. So for delta connection we can say it is answer will be the 415 volt. But here it is given star delta connection, so I think it is a printing mistake. Generally they should provide a star connection or delta connection, either of one. It is given both in this question. So if the star, then 240, if delta then 415. In star delta connection is not like that. So answer is opens question to all. Everyone will get 1 mark of this question, I think. Next question: in logic gate, NAND gate is also known as logic gate, NAND gate is also known as universal gate. ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया. देखिए आपको फ्री में मार्क देने हैं, हाँ, फालतू के फ्री में मार्क्स देना है आपको. जेटीयू बनाना ही है बीएसएनएल कैसे भी करके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. एंड ऑसिलोस्कोप इज प्राइमरी यूज टू मेजर, ऑसिलोस्कोप देखिए ये भी, ऑसिलोस्कोप इज प्राइमरी टू मेजर वेवफॉर्म. हाँ, अब ये डिप्लोमा वाले को, किसी को बेसिक को पूछ लिया ना, मतलब जो बेसिक डिप्लोमा पढ़ा हुआ है तो वो भी आंसर कर देगा. हाँ, कि ऑसिलोस्कोप जो है दैट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म. हाँ, वेवफॉर्म शेप, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन एनालिसिस, सिग्नल बिहेवियर, ऑल दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द ऑसिलोस्कोप. Which statement best describe the advantage of using DMA controller in the microprocessor system? DMA controllers are that is direct memory access controllers. In the microprocessor system is the best described by the system that DMA controllers allow the peripheral device to transfer the data directly to and from memory without involving the CPU, thereby freeing up the CPU to perform other tasks and improving overall system performance. So it improves the overall system performance because they are directly transferring data without involving the CPU. So DMA controller facilitates efficient data transfer by enabling the peripherals to access the memory directly, bypassing the CPU for the data movement operation, and this reduces the CPU's workload and minimize the number of interrupts and can significantly enhance the data transfer rate and overall system efficiency. So option D is the right answer here. Next question: which one of the following instrument is used to measure the very high DC voltage? To measure the very high DC voltage, we are using, actually to measure the voltage we are using the voltmeter. Okay, so answer should be the voltmeter only. Magger we are using, you know, for the measurement of the resistance. For generally for high DC voltage we are using a high voltage probe or high voltage DC voltmeter. So here none of that is given in the answer. They look, many of you are saying that sir, electroscope should be the right answer or not. Electroscope used to detect the presence of electrically charged or electrically you can say high voltage. It can detect the high DC voltage, but it cannot measure.
Typically it is not measuring high voltage, DC high voltage, so electroscope is not right answer. Oscilloscope, just we have seen what use of oscilloscope is again visualizing the waveform, measuring the voltage, but generally not used for extremely high DC voltage. Megger, primary use for the insulation resistance measurement, not measuring the DC high voltage. A high voltage DC voltmeter is designed to measure a very high DC voltages, so answer should be the voltmeter only. Next question, what is the difference between the function and loop in the programming? Difference between the function and loop in the programming, function and loop have several different purpose to play a distinct role. Function means the reusable block of code that performs a specific task or calculation. It can take inputs, execute its code and return an output. Purpose of function is that it helps to organize code into the modular manages and uses, you can say function are also called or invoked by their name, and they can be used for multiple times throughout the program. For example, we are using Python language. Then for example, any function we can use. For example, we can use add numbers. Result we can get definition we can use. Okay, so many different things are there. We are not going into Python right now. In loop, what happens? Loop is a control structure that repeatedly execute the block of code as long as the specified condition is true. So for the loop we are using, for while, then do while loop. These are the different loop that we are using. So these are the loops we are using. So here what they are asking, what is the difference between function and loop? A function performs a specific task while loop repeated a block of code. So this is the option A is the correct answer here. Purpose of the loops is, loops are used to automate repetitive tasks or to process items in collection, you can say, like array or list. They help reduce the code duplicate by allowing the same code run multiple time with the different data. लूप अगर हम पाइथन में फॉर एग्जांपल लूप यूज कर रहे हैं तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर रेंज ऑफ दिस एंड दिस, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो. इस रेंज में कुछ आया तो ये प्रिंट कर देना है, सेम लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which software prevents the external access to the system? बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. firewall is a system software. Firewall are designed to monitor and control the incoming and outgoing network traffic based on the predetermined security rules. They act as a barrier between the trusted internet network and untrusted, or you can say external network. Functionality of the firewall, it can block the unauthorized access, prevent cyber attacks, and ensure that only legitimate traffic is allowed through it. They can be implemented at hardware, software, or combination of both. In frequency modulation, what parameter of the carrier wave varies with the modulating signal? In frequency modulation, this is again a very simple question. Previously they were asking about phase modulation, now they are asking about the frequency modulation. In frequency modulation, the parameter of the carrier that receives the modulating signal is the frequency. So option D is the right answer. If you know the definition of the frequency modulation, then you can easily answer this question. Which of the following is the primary characteristic of the local area network, LAN? LAN is again simply, I explained earlier also, LAN connects the device within the limited area, like you can say home or office, with the physically link cable. You can say with physically, if two devices are physically linked, that we can do in limited area only. Okay, so this is the LAN. We cannot connect one sitting in the Maharashtra and one sitting in the Gujarat with the LAN network. It is practically possible? Not possible. If two users are connected with the wire, you can say, if I am saying with the optical fiber cable, one sitting in the Maharashtra and one sitting in Gujarat, both are connected with the optical fiber cable, that is LAN, that is not WAN. Generally we are defining LAN is below 10 kilometer and WAN is more than 20 kilometer. It is not like that. These are not the technically right definition, you can say. So this you should know as a technical person. Next, in a p-n junction diode, which region is formed by a majority charge carrier diffusing across the junction? Again, a simple question is here. You can say that in p-n junction diode, the region formed
by the majority charge carried by diffusing across the p-n junction is the depletion layer region. So option B is the right answer here. You can say very simple question. Okay, next question की बात करते हैं. What happens to the current through a Zener diode when it is operating in the breakdown region? Again, the answer given in this question is wrong. You can again raise a grievance in this question. Simply when a breakdown region is there, this is the characteristic of Zener diode. In photo bias, it behaves as a normal diode. In reverse bias, magnetic rate current flow until breakdown, and after breakdown, current increases sharply. So option D is the right answer. Operating in the breakdown region, अगर current constant रहेगा, current constant रहेगा. What is the constant when operating in the breakdown region? Voltage is the constant. करंट थ्रू जेनर डायोड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो ब्रेकडाउन में शार्पली इंक्रीज होगा. वोल्टेज विल बी द कांस्टेंट. सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Which instrument is used to measure the intensity of light? To measure the intensity of light, we are generally using the lux meter. Lux meter or light meter we are using, or you can say photometer also. So option A is the right answer, because we are not using ammeter, spectrometer or galvanometer to measure the light. Now, which type of motor does not require a starting capacitor or centrifugal switch? Now look, I have marked a synchronous motor because actually whatever options are given here, all are the motor that does not require starting capacitor, because synchronous motor does not require starting capacitor, universal motor does not require starting capacitor, shaded pole motor does not require starting capacitor, DC motor also does not require starting capacitor. So here a little bit confusion is there. What should be the correct answer of this question? Look, shaded pole motor is a type of matter, you can say, that does not require starting capacitor or a centrifugal switch, because your shaded motor is a simple type of single phase induction motor where the rotor is squirrel cage type and the stator has a silent pole which is part of each pole surrounded by short circuit copper ring known as a shaded pole. So shaded increase and create a delay magnetic field in a part of pole. So generally shaded pole motor is a single phase induction motor that does not require a starting capacitor, or you can say a centrifugal switch. Then sir, what about the synchronous motor? Synchronous motor typically requires external means of starting. It actually not using a centrifugal switch, you can say, और starting capacitor तो all four option, कोई भी option में starting capacitor नहीं चाहिए. सो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें कुछ एक्सटर्नल मीन्स ऑफ स्टार्टिंग चाहिए, लाइक पोनीमीटर मोटर, यू कैन से, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर VFD we are using for synchronous motor. In the universal motor operate on both AC and DC, but it usually does not require a capacitor, although it might need other component for starting. हाँ, तो दूसरे कंपोनेंट जो है उसको चाहिए स्टार्टिंग के लिए. एंड इन डीसी मोटर ऑल्सो, डीसी मोटर also does not require capacitor for starting, but a different type of motor primarily used with the DC power. Okay, so here actually I'm not saying the given answer is wrong, but all answers, you can say, all given, all the options can be the right answer. Okay, because the shaded pole motor does not require a starting capacitor or centrifugal switch, it is a simple design for shading coil to create the rotating magnetic field. So here the shaded motor is the right answer given. Okay, so there is no problem in that. Next question, which type of FET is a channel controlled by electric field applied across the reverse bias PN junction? Now look, one of the students saying this MOSFET, sir, is not right answer. Why MOSFET is not right answer? Look, now understand this question in detail. Which type of FET channel is controlled by electric field applied across the reverse bias PN junction? If you know, in JFET, reverse biasing is compulsory. Okay, in a JFET, that is a junction field effect transistor, you are applying, if you are not applying reverse biasing, then your JFET will not operate. Okay, so this given answer JFET is the right answer. In metal oxide semiconductor transistor, we are applying biasing in the oxide layer, that is the separate layer. Okay, so we cannot say MOSFET is the right answer. Okay, here JFET is only right answer. Option B is also correct. I don't think this question answer will be changed. You can apply your logic, but according to me, JFET is the right answer. Next question,
what is the primary purpose of using star delta connection for starting a three-phase motor? Why we are using star delta connection in the starting? Though primary purpose of using the star delta connection for starting three-phase motor is to reduce the inrush current during the startup. How it works actually, when the motor is, for example, we are talking about star connection, either we are using star connection or we are using delta connection. When motor is first started, the winding are connected in star configuration. This reduces the voltage applied to each winding to 1 by root 3, around, you can say, around 58%, okay, so of the line voltage, so which is turn reduced the starting current by about 1/3 of what if would be the delta connection. Then delta connection, after the motor reaches a certain speed, for example, you can say 70-80% of the rated speed, the connection switches to delta connection, and this applies a full line voltage to major winding, allowing motor to operate in the full power. So what happens by using this star delta connection? It reduces the starting current, it allows smoother start, you can say. Okay, so basically to reduce the starting current, we are using option A given is the right answer. Next question, what is the primary function of DMA controller in microprocessor system? Primary function of DMA controller, again the repeats question I can say once again. Question asked about the DMA controller, we already discussed earlier. The primary function of DMA is to transfer data between the peripherals and the memory bypassing the CPU. So option D is the right answer. What is the primary function of DAC 800 in microprocessor system? This DAC is nothing but a digital to analog converter that convert digital data to analog data. Very simple question. Option B is the right answer. Next question, again very simple question on the internet. Which IP widely used? IPv4 is widely used, you know. Option D is the right answer. Again, अगर ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो JTO मत बनो. What happens to forward voltage drop across a silicon junction diode when it is the conducting current? What happens to forward voltage drops across a silicon diode when it is conducting current? So actually, forward voltage will always remain constant. Okay, once a diode is in the forward bias, forward voltage will remain a constant. Okay, so option D is the right answer. What type of biasing is typically used to control the operation of MOSFET in the amplifier circuit? We are using the gate biasing. We are applying the VGS, that is the gate to source voltage, that is called as gate biasing. Okay, in MOSFET, in MOSFET biasing, MOSFET current flows through device in a control by this VGS. The MOSFET is typically operating in the saturation region for the amplifier, and where drain current depends on the VGS. Common biasing method, fixed biasing, we are using self biasing is there, or you can say voltage divider bias is there. These all different type of biasing we are using, and this all controlled by the VGS, that is gate to source voltage, you can say. Okay, next question, which of the following characteristic of PN junction diode determine its forward bias or reverse bias behavior? Answer will be the barrier potential. Your barrier potential will define the forward bias or reverse bias behavior. Next question, that is a very simple question again. What is the primary function of the Zener diode in the electrical circuit? Voltage regulation, we have discussed it earlier. In Java language, what is the name of these operators? Look, these operators are shift operators. This is the sign right, or this is the unsigned right, this is the left actually. So these are the shift operator, left shift, right shift. This is the left shift operator, this is the right shift operator. You can say signed right shift or unsigned right shift. So these both are the right shift. Okay, next question, blank is the graph algorithm that finds the shorted path. Pitaga's question, repeats question. Option C is the right answer. Dijkstra's algorithm is the right answer. Which compressed file format are created specifically for web fonts? For web fonts, WOFF is created. What is WOFF, sir? This is the news question actually. WOFF means the Web Open Font Format. WOFF was developed specifically for use on the web. It compresses fonts to reduce their file size for faster loading while maintaining all the necessary font data.
Then also one WOFF2 is there, is a more modern and efficient version of the WOFF, offering better compression resulting in the smaller file size compared to the WFF, leading to a faster load time of web pages. So these are widely supported by modern web browser and the standard format of serving the font of web. What is the purpose of if statement in computer programming? If क्यों यूज करते हैं? To make the decision based on the condition. Again, very simple question. Option D is the right answer. Next question. What is the primary function of the rectifier to convert the AC to DC? Again, a very simple question. ऊपर इन्वर्टर पूछ लिया, नीचे रेक्टिफायर पूछ लिया. देखो आपको फालतू के मार्क देने यहाँ पे. In logic gate, XOR gate is also called as anti-coincidence gate. So option D is the right answer here. Which component of microprocessor system provides the clock signal necessary for synchronizing its operation? So component microprocessor that provides the clock signal necessary for synchronizing operation is the clock oscillator only. देखिए यहाँ पे क्लॉक ऑसिलेटर जो है आपका वो क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए तो यूज होता है. अब देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा लॉजिक मुझे दे रहा था कि सर क्लॉक ऑसिलेटर जो होता है वो पार्ट नहीं होता, मतलब माइक्रोप्रोसेसर के अंदर नहीं होता. तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहाँ पूछा है कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है. क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए आपको पता है कि आप बेसिकली वो आपने अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे 8085 का वगैरह का यूज़ करके, तो आप बेसिक क्लॉक ऑसिलेटर का यूज़ करते थे ना, वही क्लॉक ऑसिलेटर की बात है. तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं. हाँ, जो आप आंसर दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है कि क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए क्लॉक ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं. काफ़ी बार क्या होता है, आप ज़्यादा दिमाग लगा लो ना तब भी गलत हो जाता है. In microprocessor, the number of address line determines the number of memory locations that can be accessed. Very simple question. Given answer is the correct. Which among the following component is essential in the oscillator circuit for sustaining oscillation? The feedback network is the essential. You know Carson's rule. So what is the compulsory in oscillator? You can say the पॉजिटिव फीडबैक. हाँ, अगर पॉजिटिव फीडबैक आपने नहीं दिया तो फिर ऑसिलेशन होगा ही नहीं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एवरी फ्रीक्वेंसी हैज द टू ऑर्थोगोनल फंक्शंस. हाँ, वन इज साइन एंड वन इज cosine, you can say, or every frequency has these two orthogonal functions, sine and cosine. Okay, next, HTTP protocol belongs to which of the following layer? HTTP protocol belongs to the application layer, you know. Next question, very simple question. Again, this is the repeats question. These are the questions that previously asked in the examination, so I am not detailing this question. I am not giving the detailed explanation of this question because we already discussed this earlier in the paper solution. What is the primary function of the transformer in AC electrical system? To step up or step down voltage. Again, this is the primary function of the transformer. So option B given is the right answer. Next, how does data travel through a fiber optic cable? You know, using the light signals. Again, a very simple question. Option D is the right answer. What is the difference between the compiler and interpreter in the operating system? You know, a compiler translates the entire program into the machine code before execution, and interpreter translates the execute program line by line. Again, this is the repeats question. These all are the repeats questions, so we are not going through in it. Simple answer given, all answer given are correct also. Which of the following defines the visual presentation of a web page? For visual presentation, we are using the cascading style sheets, that is the CSS. Option D is the right answer. So this is again a very simple or basics question, you can say. CSS responsible for controlling the layout, colors, font, spacing, overall appearance of the web page. It separates the content, you can say HTML from presentation, and allowing developers to style and design and look and feel of the web page without altering the underlying HTML structure. So option D is the right answer. Which of the following is not a type of analog electrical measuring instrument? Not analog instrument. So digital is there, though no analog. Digital voltmeter is not analog instrument. So option D is the right answer. Again, very simple question. Equalization technique can be categorized into a linear and non-linear technique. Linear equalization means using the linear filters to mitigate the effect of channel distortion. It is simpler to improvement but may not perform well in highly distorted or non-linear channel.
Non-linear equalization utilize non-linear filters such as you can say decision feedback equalizer to better handle several distortion or you can say non-linearities in the communication channel, providing better performance in the more complex environment. Next question, OOP, that is object-oriented programming, is the programming paradigm that focus on use of blank to represent and manipulate data. OOP use object-oriented programming use the object to represent and manipulate data. Concept of OOP is basically two concepts are there, objects and classes. Okay, so by organizing code into the object and classes, OOP enhances modularity, reusability, and the ability of the model real world entities in the programming. Next question, what is the resolution of DAC 0800? That is again 8-bit resolution is that. Next question, what is the primary purpose of the task manager in the Windows operating system? Task manager monitor and manage the process and application. So option A is the correct answer. Again, you are almost all of you are using task manager in Windows, so you know. In logic gate, NOR gate is basically combination of, this is the NOR gate. So this is the combination of OR gate and NOT gate. This is not this question about the duality of the gate. What is the dual of NOR gate? This is not question. Dual of OR gate, that is bubbled AND. Okay, but NOT gate is a basically combination of OR gate and NOT gate only. So option B is the right answer. Which describes open source operating system. Open source operating system that source code are publicly and visible and editable. Again a repeats question. Look, this is the third or fourth question that repeats in question paper. एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर कर लोगे. हाँ, सेम हमने ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि ओपन सोर्स क्या होता है, कौन सा ओपन सोर्स है, ऊपर ऐसा पूछा था, और ओपन सोर्स क्या होता है ये नीचे पूछ लिया. What are the two main types of computer memory in the operating system? आपको पता है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी, दो अलग अलग मेमोरी, मतलब बेसिकली दो टाइप के मेमोरी होते हैं आपका, रैम रोम. हाँ, ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी. देन सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क वगैरह जो है, आर द सेकेंडरी मेमोरी. A web server usually does what type of task? Web server hosts the website and delivers the response to simple request. So option A is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाईफाई राउटर इन द नेटवर्क. देखिए वाईफाई का क्या प्राइमरी पर्पस है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए. हाँ, कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क टू अदर लोकल नेटवर्क और यू कैन से इंटरनेट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए डिवाइस ड्राइवर क्यों यूज होता है. द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू एक्ट एज एन translator between the operating system and the hardware device. It allows the operating system and the software application to communicate and interact with the hardware components such as printer, keyboard, hard drive, graphics card, etc. Key function of the device driver, you can say hardware abstractions, or you can say control hardware operations, enable compatibility or device management. These are other function of the driver. So it acts as a translator between the operating system and the hardware component. Option A is the right answer here. Next question, the postfix expression AB plus CD minus star can be evaluated using a stack. Option C is the right answer. This is how postfix evaluation done. We are not going in there. These are the postfix notation. Also it is called as a reverse polish notation. इसको ऐसा भी कहा जाता है. Step 2 अगर आप करना चाहो कि कैसे इवेल्युएट करते हैं, हाँ, तो उसमें ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं ए बी सी डी फॉर दिट पर्पज़. हाँ, ऑपरेटर प्लस माइनस एंड स्टार का यूज़ होता है टू एनकाउंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑपरेशन. सो ये पर्टिकुलरली स्टैक है. हाँ, पुश ए एंड बी, ए बी का मतलब ये होगा, उसके बाद प्लस अप्लाई किया इसका मतलब होता है पॉप ए एंड बी. हाँ, तो ए प्लस बी परफॉर्म करेगा और पुश करेगा रिजल्ट को. उसके बाद पुश सी एन डी करेगा. माइनस का मतलब अगेन यहाँ पे होता है पॉप सी एन डी. हाँ, परफॉर्मेंस सी माइनस डी ऑपरेशन एंड अगेन रिजल्ट जो है वो पुश होगा. एंड उसके बाद लास्ट में जो आपने दिया है ये स्टार, वो क्या करेगा, पॉप द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी एंड सी माइनस डी, परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन करेगा दोनों का एंड देन पुश द फाइनल रिजल्ट. So this is called as stack. Okay. Next, how does the number of quantization level affect the quality of digital audio or video transmission? So this is again a very simple question. Higher level results in the higher quality transmission. So option C is the right answer here. Okay, the number of quantization level directly affects the quality of digital audio or video transmission by influencing the resolution and accuracy. Okay, resolution, accuracy, more quantization levels are there,
तो क्या होगा, मोर कोटेशन लेवल्स होगा तो इंक्रीज होगा रेजोल्यूशन ऑफ द सिग्नल. हाँ, तो finer distinction between the different amplitude level you can do. So this leads to more accurate and precise representation you can say. If your concentration level हुआ तो क्या होगा, resolution reduce होगा, resulting in the less accurate representation and potential loss of the detail you can say. Okay, next question. How noise is defined in terms of communication system? देखिए noise क्या, noise is always unwanted signal. जहां भी नॉइस वर्ड आया आपके दिमाग में अनवांटेड सिग्नल आ ही जाना चाहिए. नॉइस क्या है, नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल दैट डिस्टॉर्ट द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, जो नहीं चाहिए हमें, दैट इज द नॉइस. ओके, सो different things are there that they are defining noise and distortion are different, they are not same. Distortion you can say within the device or generally if I want to explain, I am explaining like this. The noise, for example, we are studying in one class और बाहर से जो आवाज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल नॉइस ऑफ ट्रैफिक इज देयर और नॉइस ऑफ vehicles or someone from outside, that we don't want that signal, that is unwanted signal that distorting our learning, that is the noise. और डिस्टोर्शन क्या होता है, डिस्टोर्शन मतलब क्लास में बैठे बैठे ही कोई कुछ कर रहा है और मेरा दिमाग वहाँ पे जाता है तो I cannot teach perfectly, that is called as distortion. That is not noise for me, that is my distortion. So this is the distortion. This is the simple difference between the noise and distortion. So unwanted signal that distort the transmitted information, that is noise. Next, what type of programming language is Java? Java is a platform independent programming language, you know. So option A is the right answer. Now if you don't know this, then this is a very important concept. What are the platform independent and platform dependent languages? This is very important concept. Java is a high level object oriented class based programming language, you can say. Object oriented Java कहता है, क्लास बेस्ड भी कहते हैं, हाई लेवल है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हाँ, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज भी आप कह सकते हो, सिक्योर भी है. ठीक है, तो जावा वाइडली यूज होता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे सेम कोड का यूज कर सकते हो. और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो कोड आपने विंडोज में रन करवाया वही कोड एंड्रॉइड में आप रन नहीं करवा पाओगे. ठीक है, एंड्रॉइड में रन करवाने के लिए यू नीड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोड. सो इससे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहा जाता है. Which of the following instrument is used to measure the frequency of AC signal? फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर का यूज करता है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. फ्रीक्वेंसी काउंटर और फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहा जाता है काफी बार से. In cellular network, what does the term LT stand for? That is a long term evolution. Very simple question. Option B is the right answer. What does the term frequency modulation refers in radio communication? Again, look, this answer given is the wrong. हाँ, frequency modulation का मतलब क्या होता है, मतलब it's a very simple question though. Don't know how a wrong answer is given. In radio communication, frequency refer to technique where the frequency of the carrier wave is varied in the proportion to the amplitude of the modulating signal. Frequency of the carrier signal varies with the amplitude of the modulating signal. So option A is the right answer here. A is not wrong. This is wrong. Next, which instrument is used to measure the small potential difference between the 2 point in the circuit? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. देखिए ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तो फिर ऐसे आएगी, ये क्वेश्चन जो है ये TTLIC में पूछा होगा. तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन भी इस पेपर में पूछ लिए था कि जिससे को काफ़ी जगह ऐसा होता है ना कि सीट्स खाली रहती है, काफ़ी सर्कल में ऐसा है सीट्स खाली रहती है, सीट भरती नहीं है पूरी. हाँ, तो उन लोगों के लिए हेल्प मिल जाता है बहुत कि मतलब देखो यहाँ पे भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है. हाँ, इस इतने इजी लेवल के पेपर में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको अगले साल से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके या तो प्रिपरेशन करके देना पड़ेगा LIC का, या तो आपको सोच छोड़ देना चाहिए कि आप JTO बन पाओ. बोल रहा हूँ ना, ये TTLIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको पूछ लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. Which of the following queries is used to obtain the maximum value of the database column? कौन सी क्वेरी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कौन देगा, मैक्स ही देगा. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हाँ, उसका हमें SQL में अगर लिखना है प्रोग्रामिंग तो भी लिख सकते हैं, हालांकि जाना नहीं है इसमें डिटेल में. ठीक है, मैक्स आप कॉलम नेम लिखो, एज मैक्स वैल्यू लिखो और फ्रॉम टेबल नेम लिखो तो आपको मैक्स वैल्यू जो है वो कॉलम में से मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum number of memory location that can be addressed with the 16 address line? So 2 raised to 16. 2 raised to n is the address line. So 2 raised to 16, that is 65,536.
So option C is the right answer here. Very simple question. Next question is, basically we use wide area network to connect the multiple local network across the different geographical location. We have already discussed this in detail, what is WAN and what is LAN. Then next question is, what is the function of thermal overload relay in the motor protection? What is the concept of thermal overload relay? Thermal overload relay is the motor protection used to protect the motor from damage caused by excessive current. What is the key functionality of that? The monitors overload protection, the relay monitors the current flowing through motor. If the current exceeds the predefined level of the specific duration indicating the overload condition, the relay activates and disconnects the motor from the power supply to prevent the damage. And again, also it is also used for heat sensing. It operates based on the heat generated by the current flowing through a motor. You can say a bimetallic strip or similar heat sensitive element inside the relay bands activates and heats up due to excessive current. Automatic reset also there. Some thermal overload relay are designed to automatic reset after the cooling down. Prevention of damage also done by this, by disconnecting the motor during the overload condition. The relay helps to prevent the overheating, this mechanical damage and the potential failure of the motor and associated equipment. So in general, you can say thermal overload relay is crucial for safeguarding the electrical motor by preventing the overheating and reducing the risk of damage caused by that is excessive current. Okay. So option C is the right answer here, to disconnect the motor from power in case of overheating. Next question, which of the following generator produce the direct current, that is DC current? Okay, we are also called it as a dynamo. Okay, dynamo generally is type of DC generator. Dynamo converts mechanical energy into direct current, that is called as electrical energy. Generally they use a commutator to rectify the AC generated in the armature into a directional DC output. Generally historically you can say this DC dynamo generating the electric energy, this electric direct current, DC motors, batteries and electrical device, all application dynamo is used. Okay. Next, what is the web application? Web application is the application program that is stored on the remote server and delivered over the internet through a browser interface. So web application, very simple question. Different models are there. Client server model is there. Then different app accessibility and technologies are there. Front end technology, back end technology. Different example you can say email service, social media, online banking, productivity tools. Advantage is easy to update, scalability, accessibility. Those are the advantage of it. Next, which of the following is not a common programming? What is not a common programming? Object-oriented programming, we are using functional programming is there, procedural programming is there, then logical programming is there, declarative programming is there. There is no like visual programming. Okay, so option not is given. Option B is the right answer here. Next question, what is a typical frequency range in the clock oscillator used in the modern microprocessor? देखिए ऊपर पूछा था कि माइक्रोप्रोसेसर में क्लॉक किससे देते हैं, क्लॉक ऑसिलेटर से देते हैं. यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लॉक ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है. इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज होता है. जनरली 1 to 5 गीगाहर्ट्ज रेंज इज यूज्ड फॉर अ माइक्रोप्रोसेसर क्लॉक फ्रीक्वेंसी. ओके, जनरली हम गीगाहर्ट्ज का एक क्लॉक, आपने मतलब प्रोजेक्ट बनाए होंगे कॉलेज में माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ करके, तो आपने वो उसका एक आता है क्लॉक, हाँ मतलब पर्टिकुलरली क्लॉक ऑसिलेटर वो परचेज भी किया होगा. In amplitude modulation, which component carries the actual information being transmitted? Again, this is a very interesting question. Sideband also carried information being transmitted, and modulating signal also carried information being transmitted. I think this question will be declared open to all. In amplitude modulation, amplitude of the carrier carries the actual information being transmitted. Actually जो amplitude होता है उसमें तो information होता है. So carrier जो होता है उसमें information नहीं होता. Modulating signal जो होता है, and a signal containing information to be transmitted, this audio, video. So this signal modulates the amplitude of the carrier wave. तो वो जो आपका modulating signal है, हाँ, और amplitude modulated signal है, तो उसी में जो है आपका information होता है. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि modulating signal में information नहीं होता है. साइड बैंड में भी information होता है. साइड बैंड जो आपके होते हैं, जो आपका कैरियर होता है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कैरियर सिर्फ ले जाने के लिए. हाँ, साइड बैंड में भी इन्फॉर्मेशन होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में भी इन्फॉर्मेशन होता है. तो दोनों ही सही आंसर ऐसा आप कह सकते हो.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कौन सा नहीं है? हार्वर्ड है, माइक्रो आर्किटेक्चर है, वान आर्किटेक्चर है, ऑक्सफोर्ड आर्किटेक्चर, ऐसा कभी नाम सुना है क्या? मतलब सुना होता तो आप इसको मतलब करते कि ये आर्किटेक्चर है, ऐसा कोई आर्किटेक्चर होता नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। हाउ मेनी डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेयर आर देयर इन द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, ये सबको पता है। हाँ, कौन से 7 होते हैं ये भी मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को जो नहीं पता है उसके लिए सिंपल यू कैन से फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, दीज आर द 7 लेयर इन द ओएसआई मॉडल। Which instrument would you use to measure the insulation resistance of the motor winding? देखिए ऊपर आया था ना मैगर, वहाँ बताया था डिटेल में मैंने, मैगर का यूज करते हैं हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये भी रिपीटेड मतलब बहुत बार रिपीटेडली पीटा हुआ क्वेश्चन। Which computer network connects the group of computer over large distance? अगेन वैन, देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लार्ज डिस्टेंस वैन। अगेन मैंने आपको ऊपर डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट से तीसरा क्वेश्चन है। What is the purpose of AVR, that is automatic voltage regulator in generating units? देखिए AVR जो है उसका क्या पर्पज़ है यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो AVR जो है अगर उसकी हम बात करें तो AVR जो है वो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करता है। हाँ, एक्चुअली मेन पर्पज़ उसका ये होता है, वोल्टेज रेगुलेशन भी करता है, हाँ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है आपको, लेकिन टू प्रोवाइड द कांस्टेंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज, ये उसका मेन पर्पस होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिया है वोल्टेज रेगुलेटर तो कांस्टेंट देगा, इस क्वेश्चन में आंसर है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ मीमो? हमने आपको ऊपर बोला था मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। देखिए एमआईएमई पढ़ के भी मीमो ही दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अभी 5G चल रहा है ना, 4G। तो ये अभी तो वैसे 5G पे लोग चले गए, लेकिन BSNL अभी 4G में आ रहा है। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट मीमो इज दैट। Blank is a basic language in which the web pages are written and are used for creating a Java structure and content of web page. देखिए blank is a basic language in the web page. web page basically किससे बनाया जाता है? web page जो है वो बताया आपको बेसिकली जो है वो HTML से बनाया जाता है। तो HTML सही आंसर है। यहाँ पे गलती से मुझे लगता है ग्रीन कलर हो गया है, ये रेड कलर होना चाहिए जावा पे। हाँ, HTML का यूज़ करते हैं हम, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यू नो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लैंग्वेज इन विच द वेब पेजेस आर रिटन एंड यूज फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the purpose of GUI? That is graphical user interface in the computer operating system. आप जो देखते हो ना GUI पे, जब आप सीपान का जो नेटवर्क देखते हो, हाँ पर्टिकुलर कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ कौन से डिवाइसेस है, उसे GUI कहते हैं, उसे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। विजुअल एनवायरनमेंट विद द आइकॉन्स, विंडोज एंड मेनूज फॉर other interactions. Option A is the right answer here. Okay, so this is about this question paper solution of the JTO LICE 2024. I hope you get all this question correctly and you will qualify the exam. अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में। कोई भी इस क्वेश्चन में आपको अभी भी कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर आपने आंसर गलत बताया, हो सकता है, आई यूज़ माई बेस्ट ऑफ नॉलेज, बट ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ। हाँ, मतलब मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस सोल्यूशन में बताया है, कुछ गलती मेरे से जाने अनजाने में हो सकते हैं। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट सही पता होता है, आंसर सही पता होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार ऐसा फ्लो में निकल जाता है कुछ गलत। तो देखो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मेरा बेस्ट नॉलेज का यूज़ करके मैंने बिल्कुल सारे सही आंसर आपको प्रोविजनल आंसर के बेस पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर कुछ फाइनल आंसर की में चेंज हुआ आंसर और मुझे लगा कि नहीं सच में चेंज होना चाहिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस क्वेश्चन पेपर में शायद से गलत बता दिया, ये होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अब ग्रीवियंस रेज करना है तो भी फटाफट कर देना, बहुत टाइम वेस्ट मत करना, कि अभी इसमें बहुत टाइम नहीं देता। आई थिंक इस वीकेंड के बाद शायद नहीं कर पाओगे ग्रीवियंस रेज, ओनली जनरली एक हफ्ते का ही टाइम देता है, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को आया है। तो फटाफट जो है ग्रीवियंस रेज कर देना इस क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन देख के, और होपफुली इतना इजी पेपर था, आप सब पास हो जाओगे। तो सबको ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपने इस वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके डिपार्टमेंट में दूसरे जो भी फ्रेंड है प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, उससे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।